In the auscultation of the precordium, it's always useful to test whether if you are auscultating with the diaphragm, तो आपको diaphragm से आवाज़ भी आ रही है या नहीं. So, okay, so diaphragm, you start with the examination of precordium with the diaphragm, and then you can auscultate with the bell. We start with the apical area, auscultation of the mitral area, and you need to, obviously you need to time, you need to identify whether it's first heart sound or a second heart sound, and if there is a murmur, whether it's a systolic murmur or a diastolic murmur. And that you do by palpating the carotid pulsations. First heart sound comes just before systole. Carotid pulsation से just पहले आती है first heart sound, और carotid pulsation के just बाद you get second heart sound. So if you find a murmur that is synchronous with your carotid pulsations, it is a systolic murmur, और जो इसके अलावा आ रहा है that is a diastolic murmur. Remember, as a rule, you do not jump from one area to another area. You need to move your stethoscope, it's called inching your stethoscope from the mitral area to the tricuspid area to the A2 area, pulmonary area, and then A1 area. So in the form of like Z, you start with the mitral area. So you auscultate, and what do you focus on? One, is the rhythm regular or not? Sorry. So, first thing that you should focus on is whether the rhythm is regular or not. Second thing is, what is the intensity of first heart sound? What is the intensity of second heart sound, especially the pulmonary component? Is there a splitting of the second heart sound? And if there is splitting of the second heart sound, what is the type of splitting? Like it's a fixed wide splitting, it's just wide splitting, or it's a paradoxical splitting of the second heart sound. And then is there a third or fourth heart sound? And finally you talk about if there is a murmur. So if you find a murmur, first you need to tell whether it's a systolic murmur or a diastolic murmur. What is the location of the murmur? It's best heard in the mitral area or in the tricuspid area. Is this murmur radiating towards any side? For example, the murmur of mitral regurgitation mostly radiates towards the axilla. What is the grade of the murmur? Now there are 6 grades of murmurs, and it is sometimes difficult to memorize what is the grade of the murmur. So when there is a grading system, it's best to start from the midway. If you find a thrill, it's grade 4. If you do not find a thrill, it can be 3, 2, and 1. Generally the murmurs like grade 2 and grade 1 are faint murmurs. You probably will not get these murmurs in the exams. And grade 5 and 6 murmurs are also rare. So whether if you find a murmur, it's most likely it's either grade 3 or 4. So if there is a thrill, this is grade 4 murmur. If there is no thrill, it's grade 3 murmur. And then you also tell, is there any change in the intensity of murmur with respiration? So for example, you find a pansystolic murmur or a systolic murmur at the mitral area. You ask the patient, the left-sided murmurs, that is the murmur of mitral and aortic area, they are more pronounced during expiration, and right-sided murmurs, they are more pronounced during
इंस्पिरेशन, गहरा सांस लें, बाहर निकालें, रोक लें। आप ये फॉलो नहीं करना आपने, मैं सिर्फ जो मुझे अपनी आवाज़ की उसका नहीं पता चलता, आप भी एग्ज़ाम में ऐसे सुनोगे। मुझे याद है फ्यू इयर्स बैक मैं इसी तरह से फाइनल ईयर वालों को पढ़ा रहा था। मैंने कहा कि देखें, एक चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और एग्जामिनर्स को भी पसंद नहीं होती, और ये आपने नहीं कहना ऑस्कल्टेशन के ऊपर कि सर देयर इज़ एन एडिड साउंड। और वो सर जाके लोग कहेंगे बेटा क्या है आपको मिला, सर देयर इज़ एन एडिड साउंड। और मैं आपको बताऊँ उसकी अप्रीहेंशन क्या है। वो कई भाई और आपा कहती हैं कि अगर आपने ये बता दिया मर्मर तो उनको पता चल जाएगा आपको बाहर से पता चला है। तो फाइनल ईयर लेवल पे बस इतना काफ़ी होता है कि आप कह दें कि देयर इज़ नो एडिड साउंड। एंड आई categorically told the final year students, don't say there is an added sound, tell what it is, it's a murmur, systolic or diastolic। मैंने आपको ये सारे फीचर्स बताएं। तो फाइनल ईयर का वाइवा था, पीरियड्स के अंदर गए और जो स्टूडेंट जाए वो एग्जामिनर को जाके कहे कि सर देयर इज़ एन एडिड साउंड। तो एक दिन तंग आके एग्जामिनर ने पूछा कि आपको कहा किसने है कि आप ये बोले। उन्होंने कहा जी डॉक्टर जमान ने कहा था कि आप। अब ऐसा ना हो कि आप मेडिसिन में जाके गर्दन पे आपने स्टेथ लगाई और ऑस्कल्टेट कर रहे हैं उनके, डॉक्टर जमान ने हमें बताया था कैसे ऑस्कल्टेट करते हैं। सो यू नीड फर्स्ट ऑस्कल्टेट विद द डायफ्राम। गहरा सांस लें, बाहर निकालें, रोक लें। जी ठीक है, सांस ले लें। ये भी उसे कहना है सांस ले ले, वरना वो थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब सांस ले लो। You need to auscultate during expiration in case of mitral and aortic area, and during inspiration in case of tricuspid and pulmonary area. It's always better कि आप पेशेंट को साथ लेके चलें। ये कहना कि जी आप सांस निकालें और रोक लें, उसके लिए मुश्किल है। आप इसे कहें गहरा सांस लें, बाहर निकालें, रोक लें। इन रियल टाइम आप पेशेंट को गाइड कर रहे हैं कि आप रुक जाएं। ठीक है, अगर मैं ठीक है ले लें सांस, गहरा सांस लें, रोक लें। ठीक है, ले लीजिए सांस। इस तरह से मैं पल्मोनरी एरिया को ऑस्कल्टेट कर रहा था। गहरा सांस लें, रोक लें। ठीक है, सांस ले लें, गहरा सांस लें, बाहर निकालें, रोक लें। ठीक है। इफ़ यू फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गेट अ केस सिस्टोलिक murmur at mitral area, move along the axilla to find whether there is radiation of this murmur to the axilla. If there is a systolic murmur along in the pulmonary area, move along the clavicle to find whether there is radiation towards this side. The murmur of pulmonary stenosis, it radiates along the lower border of the left clavicle. If there is a systolic murmur at the A1 area, this may be a murmur of aortic stenosis. You need to auscultate the carotids as well, whether there is radiation of this murmur along the carotids. For mitral stenosis, I mean you need to do this in your examination of precordium. You auscultate with the bell. Do not apply it firmly against the chest, because then it acts like a diaphragm. Skin stretch हो जाती है तो it's no more a bell, it acts like a diaphragm. So gently इसको रखें यहाँ पे, उस तरफ करवट ले लें. You need to place your thumb on the carotids. गहरा सांस लें, बाहर निकालें, रोक लें. So a murmur of mitral, ठीक है सीधे हो जाइए. A murmur of mitral stenosis would be a diastolic murmur, best heard in the left lateral position and during expiration. AR का murmur on the other hand is best heard in the A2 area in the leaning forward position. उठ के बैठें, आगे झुक जाएं, गहरा सांस लें, बाहर निकालें, रोक लें. And you are also palpating the carotids. ठीक है, लेट जाइए. What is the best way to palpate for the carotid is you identify the Adam's apple and you go onto the lateral side, तो आपको मिलेगा sternocleidomastoid. अगर आप थोड़ा सा sternocleidomastoid को displace करें laterally and just go down, your thumb will be just on the carotids. So you go on the lateral side, slightly displace sternocleidomastoid and go down, and there is the carotid pulsation.